Okay. Ma'am, should I start? ओके ओके नवजोत सर इसको रिकॉर्डिंग डाल देना पीछे ओके डॉक्टर आकांक्षा प्लीज स्टार्ट A very good morning to all in this beautiful event ahead. This is Akanksha, your host for this beautiful event. I am really grateful and delightful that you are giving your valuable time for this seminar. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce you to our guest of the day. Firstly, we have with us Dr. Ajay Kumar. He is Director Tecnia Institute of Advanced Studies, Delhi. Dr. Ajay Kumar, Director of Tecnia Institute of Advanced Studies, approved by AICT, done his PhD management from MDU and has more than 22 years of experience in field of education and industry. Dr. Rathore has conceptualized and conveyed more than 30 national and international conferences and attended several national and international conferences as guest of honor, guided 7 number of doctoral students, and he authored number of books. Now I request Dr. Rashmi Gujarati ma'am to kindly welcome sir. Thank you, Akanksha, and Honorable Chairman, Sir, Vice Chairman, Sir, and dear principals and my dear faculty members. I, Dr. Rashmi Gujarati, Campus Director, and on behalf of KC Group of Institution, I welcome Dr. Ajay Kumar from Delhi, Tecnia Institute of Advanced Study, and Dr. Maninder from DNA Institute of Management College from New Delhi, IP University. I welcome in this seminar today. The seminar is going on New Education Policy 2020. As we all know that government has implemented this policy on 29th July 2020. And by the permission of the Narendra Modi, the Union Cabinet has introduced this policy. The government has declared and started to implement the new education policy, and now they are asking to the colleges also that did you have implemented this policy or not? This is a very big issue to understand. There is a big challenges and issues which has to be understand when we are going to implement the new education policy. Already we know that government has implemented, but then also we should know that what are the policies are there and how we will run, because we have to be ready in the future that those students are coming in our campus. They are coming with the multi disciplinary task, and we don't know that the student who has learned a physics chemistry, and with that they have learned a Sanskrit also. So we should be ready that how we have to manage this type of students, how we have to implement these courses in our campus. This is a big challenge for us. And if we see that there is a lot of courses they have started, we have to start with that. Lot of the online courses they have given to start us. So these all issues are very big issue. And since 2020, when this policy has been passed, AICT and UGC has given the mandatory to organize these seminars in each and every colleges. Why? Because to understand each and every faculty that how we have to focus on this and how we have to implement this policy in our campus. Today with us, Dr. Ajay Kumar. He has a vast experience, and as I know him very personally, I have worked with him 4 years. So I know that a good knowledge you are going to get from Dr. Ajay Kumar. So I welcome Dr. Ajay Kumar, sir, in KC Group of Institution online. Later on, we are going to invite you offline also. So welcome, Dr. Ajay. Please. Uh, First of all, I would like to congratulate KC Group of Institutions and especially Dr. Rashmi Gujarati for inviting me on the occasion of New Education Policy 2020. 2020 policy of NEP, it's not a policy. It is the responsibility which has been shouldered on us because we are HEIs, higher education institutions. And who is the people who's going to implement the policy? That is the faculty concern, because faculty has to know what exactly is the NEP is all about. Unless and until they don't know what is exactly is the NEP essence, what is exactly the NEP is up to, they could not be able to implement those things in the classrooms.
So I will be making it very short and very crisp to make you people understand what exactly is required out of NAP, what exactly is NAP, and I will be limiting myself to a higher education institution, because there is a school education also, there is a vocational education also, that will open up a new Pandora box. I'll, because KCC group is a higher education institute, I'll be limited myself to the higher education policies only. Before we start NEP, let's just have a look at the things which we are have to follow. Uh, NEP 2020 replaces NEP 1986. 1986 policy was earlier, before 2020 policy was introduced. That is a 34-year-old policy which has been replaced. The first thing is that NEP replaces the 34-year-old 1986 National Education Policy. This is the first thing. Now, second point is that the fundamental pillar on which the policy depends is one, SS, means education must be accessible. Number two, equity. There has to be equity, no disparity. Number three, quality. The content which we are giving to the students should be of quality. Fourth is affordability. That education must be affordable. It should be within the reach of each and every person of the society, even the marginalized people of the society. And last is very important, that is accountability. Means whatever we are teaching as a faculty members, as a higher education institution, it's a responsibility that where our learners are landing. So accountability on that part. So these are the, you can say, the five pillars on which this NEP 2020 stands: access, equity, quality, affordability, and accountability. Right. Now, this policy has to be aligned with 2030, means 2020 हो चुका, 2030 तक हमारा एजेंडा है कि हम इसको सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके लाइन ऑफ एक्शन में ले आए. मींस agenda is for sustainable development and aim to transform India into a vibrant knowledge society. We have to transform India to a vibrant knowledge society, global knowledge superpower. It's our mission. Global knowledge superpower, as far as India is concerned, 2030 is the time which the government has set up. So already we are 2022, 2 year already passed, and still if we are looking forward what is to do, then we are going to miss the bus. Now it's time to act. Now it's time to act. So the thing, second part is that it has to be vibrant knowledge of society, then has to be holistic, it has to be flexible, it has to be multidisciplinary, and it has to be suited for the just on, madam. Somebody is muting me. Please, I'm just opening up for you again. Am I audible to you? Yes. Madam, you are not audible. Audible. Yes, sir, you are. Mithilesh sir, Okay. please mute yourself. Dr. Mithilesh? Yes. मैडम जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लीज इंश्योर कि मेरा माइक ऑफ हो जाता है, फिर मेरे को पता नहीं रहता. You please ensure that part. Okay, so the second part is that the policy which we've been talking about, it has to undertake what? Number one, school and colleges has to work on with, number two, holistic development. Number two, it has to be flexible. Number three, it has to be multidisciplinary. Number four, it has to be suited for the 21st century needs and aimed to bring out unique capability in each and every student. Means each and every student of your class has to be taken on the task as far as the new education policy is concerned. So this is the challenges which have been put forwarded by us. This policy was formulated with a detailed consultation process, unprecedented as far as depth and the scale is concerned. Constitution consultation are involving 2 lakh suggestions. It has come out with 2 lakh suggestions, right? 2 lakhs 5,000 gram panchayat, 6,600 blocks, 6,000 ULBs, and 676 district
this is a gigantic work which the government has undertaken to work on with this new education policy, right? So, what exactly is the aim, or we can say the highlighted, which has been thrusted for higher education institution? Number one is the increase the GER, gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio talks about that how many people in India is being able to afford higher education. Okay, as of now, the government has put across that we have to reach 50% GER, gross enrollment ratio, by 2035. The target has been set up by the government that as far as our India is concerned, 50% of our population must be able to reach to higher education organizations in 2035. Right, this is the target which they have set up. Number two target which they set up is the holistic and multidisciplinary education. That means interdisciplinary and multidisciplinary. Two things are there. So policy talks about the broad-based multidisciplinary holistic education for undergraduate level, integration, rigorous exposure to science, art, humanities, mathematics and professional fields. STEM जिसको बोलते हैं, ठीक है? So means all the STEM subjects are to be taken into calculation because the technology depends upon the STEM subjects. So STEM subjects should not be taken on the back seat. They are the front seat because they are the major component of the knowledge domain. So immediately जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 2035 तक 50% होएगा और हमारे को स्टेम सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर 20 enhancing the critical 21st century capabilities in the field across as far as art, humanities, language, social science, sciences, professional, technical, vocational fields are concerned because these are subjects are the base of the whole science education. Then third, which they talk about is undergraduate degree will be either of 3 years or 4 year duration. Means there has to be a credit system like ABC, academic bank of credits. All university has to work on, has to establish digital store of the academic credit earned from various recognized HEIs. किस किस HEI से आपने क्या किया? अगर आपने MOOC से कोई HEIs कोई कोर्स किया है, उसके आपने 3 क्रेडिट्स अर्न किए, दैट विल बी एडेड इन योर डिजिटल प्रोफाइल. जो आपका डिजी लॉकर होगा उसमें प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा और आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं उसको. That is as good as you have completed that proficiency on those parameters and have along with that able to develop that proficiency capability keeping in view that domain into consideration. So MOOCs के अंदर आप जो भी कर रहे हैं 2 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का 4 क्रेडिट का डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर. आप उसी हिसाब से आप अंडरटेक कर सकते हैं. उसके सर्टिफिकेट को आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पुटअप करवा सकते हैं और उसको अपने मार्कशीट के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हैं. दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटली स्टोर एंड दिस सिस्टम हैज बीन पुट फॉरवर्डेड फॉर एवरी HEIs. अपने HEIs हर HEIs को ये सिस्टम बनाना पड़ेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को कैलकुलेट करने का. Initially, this responsibility has been put up with the UGC and the universities and down the line HEIs also. So आने वाले टाइम में इस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा. थर्ड, नंबर ऑफ इनिशिएटिव हैज टेकन अप ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स की हम बात करते हैं. जब हम क्लास में जाते हैं तो वी आर द as a faculty we are going in the class and we have to work on with the optimal learning environments. Means your learning environment has to optimize. How we can be able to optimize the learning environment? This is through one thing, that is our pedagogy. हम pedagogy क्या implement करते हैं, क्या हमारा करिकुलम मैटर है, क्या हमारे को इनोवेशन की ऑटोनॉमी मिली हुई है, डू द फैकल्टी हैज बीन गिवन एनफ you can say exposure to innovate and include that innovation in their course curriculum. That is very important because the creative field जो creativity है we are failing. हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग हट जाता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा एलिबरेट करता हूँ. When we talk in the class movement में their students is the learner. Students क्या है? Learner है.
अब लर्नर्स के लेवल्स होते हैं, लर्नर्स के जो लेवल्स होते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैज डिफाइंड देयर आर 6 लेवल्स ऑफ अ लर्नर। जो हम लर्नर्स को समझाते हैं कि भाई आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। सो हम जब बच्चे से बात करते हैं नंबर 1 लेवल, दैट मीन्स ही रिमेंबर, he just has got a mug up capacity, उसको रट्टाफिकेशन से उसको रिमेंबर करवा दिया, that means the learner has reached that number 1 level, that means remembrance. He will be able to define, he will be able to tell you, he will be able to list out, describe, recite, recall, identify, so on. This is level 1. Level 2, second level is understanding. Understanding means understand the information, grasping the meaning, interpret the compare and contrast, describe and explain the things, paraphrase, restate. All these things comes under level 2. Level 3 comes where you use information, methods, concepts, theory in new situation. That is known as learner 3, that talks about the application. That is an application. It means here the students will be calculate, predict, apply, solve, illustrate. हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, आपने देखा होगा शुरू के 5 क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। वो एमसीक्यूज क्या होते हैं? दैट इज टॉक्स अबाउट लेवल 1, ये रिमेंबर है कि बच्चे को नहीं है। शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो लेवल 2 को अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए होते हैं, दैट इज अ लेवल 2। थर्ड, जब हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, जो 14 मार्क्स का बिगर क्वेश्चन होता है, जो हाफ ऑफ पोर्शन करके जो दो दिए जाते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन। एंड फोर्थ लेवल इज एनालिसिस, जो 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन 2 पार्ट्स and classify and outline, break down and categorize, analyze, diagram, illustrate, interfere and select. All these things, contradictory informations, and you can be analyzed. यहाँ पे आके आपकी एजुकेशन सिस्टम खत्म। यहाँ पे आके ऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया इज कोलैप्स्ड। 4 लेवल तक पहुंचता है हमारा इंडिया का सिस्टम, उसके बाद बीटी इज ओवर फॉर अस, और हम बच्चे को छोड़ देते हैं, मार्केट में उतरो, अपना जॉब ढूंढो, अपनी क्रिएटिविटी से। वी डोंट वांट टू डू आवर ड्यूटी as far as the last 2 learning levels are concerned, as far as our faculty duty is concerned. That 2 levels is known as evaluation and creating. Creativity is missing, evaluation part is missing total. This is known as higher level of learnings. कोई भी हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो क्रिएटिविटी सिखा सके, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको, फैकल्टी भी ट्रेंड नहीं है। अब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, आप बच्चों फैकल्टी से बोलोगे कितने पेटेंट्स हैं? पेटेंट्स नोन, इफ यू आर हैविंग पेटेंट्स मींस यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। इफ यू हैव गॉट इवैल्यूएशन पावर, दैट मींस यू आर अ कॉपीराइटेड पर्सन। आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मामले में बैंकक्रप्ट, होल इज बैंकक्रप्ट, दिमाग ही नहीं है, कट कॉपी पेस्ट। This is the actual system. We have to apply, brain has to apply. ये 98% हम अनयूटिलाइज छोड़ देते हैं, 2% यूज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 4 घंटे 25 मिनट का टाइम फ्रेम हिट कर रहे हैं इस टाइम 24 घंटे के अंदर, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एंड वी डोंट हैव अदर टाइम टू इनोवेट अदर थिंग्स। तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, बिकॉज टाइम इज द मेजर रिसोर्स which we have to invest in innovation and creativity, and we are cutting our time on the social media platforms. That is because of our priorities on that. So I'm coming on to the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy talks about the next 2 level, that is an evaluation. Evaluation means compare, discriminate between ideas. एक आइडिया कुछ दिया, दूसरे ने कोई और आइडिया दिया, तीसरे ने कुछ और आइडिया दिया. How to find out which is the best idea suitable for a particular eventuality or particular problem solving के अंदर कौन सा आइडिया बेस्ट लगेगा, that is known as evaluation. अगर आपको प्यास लग रही है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप सोचेंगे पानी पी लूं, आप सोचेंगे बिस्लरी का पानी पी लूं, आप सोचेंगे जूस ले लूं, कॉफी ले लूं, चाय ले लूं. दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन बाय यू, सिंपल टर्म्स में. अब जब आपने चूज किया कि आई वांट टू हैव अ बिस्लरी वाटर, दिस आउट ऑफ 5 में से आपने चूज किया 1, दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन. दिस पार्ट इज मिसिंग इन हायर एजुकेशन लर्निंग. वी डोंट नो कि हम बच्चों को, जब हम कोई
सिविल इंजीनियर बना रहे हैं या आईटी इंजीनियर बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, कौन सी प्लेटफॉर्म पे काम करना है जिससे मेरे 5 स्टेप्स की बजाय वो 2 स्टेप्स में मेरा काम कंप्लीट हो जाए, आई विल बी एबल टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव्स। हम उसको 5 स्टेप की बजाय 20 स्टेप बता देते हैं, 20 स्टेप के अंदर वो घूम के रह जाता है, बिकॉज यू नो बेटर हाउ टू डू ए शॉर्टकट फॉर दैट। आपको बड़ा रास्ता भी पता है, आपको छोटा रास्ता भी पता है, फैकल्टी जानता है, फैकल्टी नोस कि हम बच्चे को घुमा रहे हैं या उसको सीधे रास्ते पे ला रहे हैं। ये फैकल्टी की खुद इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि हमें बच्चे को सीधा रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे वो 4 स्टेप का जो वर्किंग मूवमेंट है वो 2 स्टेप में कन्वर्ट कर ले और 2 स्टेप्स का 1 स्टेप में कन्वर्ट कर ले। दैट मीन्स इनोवेशन मीन्स इकोनोमाइजिंग ऑन आवर एफर्ट्स, economizing on our money, economizing on our time. Time is non-renewable energy, you can say non-renewable resource. Time lost once in your life, it will never come back. सबसे important आपका टाइम फ्रेम है। सबसे जो टाइम को नहीं समझ सकता वो कुछ नहीं अचीव कर सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एचईआई के पास भी टाइम फ्रेम है, 2035 तक मेरा इंस्टीट्यूट ऐसे खड़ा हो नॉलेज सुपर पावर के रूप में। इट शुड बी अ हार्ट, थंपिंग हार्ट, एंड इट्स गोइंग टू इजेक्ट आउट ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर सोसाइटी। दैट शुड बी द motto of any HEI. So this is the 5th part of Bloom's taxonomy, making choice based reasoned argument. There has to be reasoned argument. बातों में हम आर्ग्यू करते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट विद लॉजिक्स, आर्ग्यूमेंट्स विद सम काइंड ऑफ फाइनर पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स which recognize subjectivity and create criteria for judgments. This is the criteria and I'm going to judge on these criteria. Fix those criteria, and criteria has to be meaningfully fixed. क्राइटेरिया हम सिर्फ क्राइटेरिया को दिखाने के लिए ना करें, क्राइटेरिया का रियल सेंस होना चाहिए। अगर हम 1 किलो का बट्टा लेके तोलते हैं भाई 1 किलो दाल, अब 1 किलो का जो बट्टा है बंबई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, 1 किलो का 1 किलो ही रहता है, क्राइटेरिया चेंज नहीं होता। समझ के बात को। तो सिमिलरली यू हैव टू इजेक्ट आउट those criteria which is fundamental in nature, which cannot change from location, from person to person. हमें किसी को मतलब शक्ल देख के तिलक नहीं करना, हमें देखना है कि उसके अंदर मेरिट्स हैं, तो उस मेरिट्स को सलाम, उस मेरिट्स को निखारने का काम है हमारा फैकल्टी का, और विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर। लास्ट पॉइंट ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज creativity. We never create anything. Use old ideas to create new ones. आप बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखिए, बोलो सॉल्यूशन ढूंढिए बेटे इस पे, आप ये आपका असाइनमेंट है, लेट देम इनोवेट। 5 का ग्रुप बनाइए, एक प्रॉब्लम दे दीजिए, पूरी क्लास को आप 60 की क्लास को 5-5 के ग्रुप में बना के एक प्रॉब्लम दे दीजिए और उस पर काम करवाइए। उसको बोला अगर कुछ ने सॉल्यूशन दिया विल गो फॉर पेटेंट, गाइड देम टू गो फॉर पेटेंट। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर 20 पेटेंट खड़े होंगे, एक फैकल्टी 20 पेटेंट खड़ा कर सकती है। काम करना आना चाहिए, सिर्फ एक फाइल तो करना होता है, उसमें करना क्या होता है। तो यू कैन रीड, जब आपको खुद लगेगा मेरे नाम से पेटेंट्स हो गए, मेरा एपीआई स्कोर बढ़ गया, मैं आई एम ए क्वालिटी पर्सन, और आप ये मान के चलें 2050 2035 में कौन सी यंग फैकल्टी है वो 2035 में उस टाइम में सिस्टम को रन करेंगे। तो जो यंग फैकल्टी है, इट्स ए चैलेंजिंग बिफोर दैट कि हम उसको अपने आप को उस टाइम के लिए प्रिपेयर करें 2035 के लिए कि हम टॉप नॉच पोजीशन पे आ जाए। वो कैसे होगा? अभी से आप ब्रिक्स लगानी शुरू करिए, तभी इमारत बनेगी। अभी से नींव पक्की करिए, तभी इमारत बनेगी। तो आप पहले पेटेंट्स, पहले कॉपीराइट्स और स्कोपस के अंदर आर्टिकल्स और आपके वेब ऑफ साइंस के अंदर आर्टिकल्स, ये मस्ट फैक्टर हैं। अगर ये नहीं है, यू आर अ बैंकरप्ट पर्सन, मींस देयर इज अ विजडम, लैकिंग ऑफ विजडम। विजडम अगर हमारे पास नहीं है, बेंचमार्क नहीं है, तो हम फिर कुछ नहीं है सिस्टम के अंदर एज फार एज फैकल्टी इज कंसर्न। सो प्रिडिक्ट, ड्रॉ कंक्लूजन्स, तो हम बात कर रहे हैं हायर लेवल ऑफ लर्निंग। हायर लेवल ऑफ लर्निंग में 2 ही चीजें आती हैं जहां पे हमारा सिस्टम फेल होता है, दैट इज द इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग। नाउ दीज 2 थिंग्स आर द 3 types of domains are taken into consideration: cognitive, affective and behavioral. इनको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। अगर आपने बोला मैंने बच्चों को इंटरनल असेसमेंट देना है या हमने फिक्स टाइम एग्जामिनेशंस लेना है,
The fixed time examinations and internal assessment are not the tools to assess the students' higher education learnings. Higher education learnings के लिए fixed hour examination is misfit. Misfit. I'm saying misfit. So आप उसको evaluate कैसे करोगे? उसको evaluate कैसे करोगे? क्योंकि fixed hour examination जो हम बात करते हैं CIE और SEE, that will only up to 4 level पे खत्म हो जाता है वो. Remembering, understand, applying, analyzing, that part is over. But to evaluate fifth level और creative part को domain को handle करने के लिए you require different set of system. For that you have got project work, you have got a minor project work, you have got a capstone project, you have got a course projects. आप उनको प्रोजेक्ट्स के रूप में दीजिए, उसका असेसमेंट प्रॉपर्ली करिए और एक कमेटी बना के उसका असेसमेंट करिए. उस कमेटी के अंदर हर फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, तब आप उसको सही मायने में एक्सपर्ट कर इवेलुएट कर सकते हैं. अगर आप बोलोगे फिक्स्ड आवर एग्जामिनेशन से मैं क्रिएटिविटी को इवेलुएट कर लूंगा, नॉट पॉसिबल. अगर आप बोलेंगे कि मैं आप सोचेंगे इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मैं उसका इवेलुएटिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करके उसको आप इवेलुएट कर लूंगा, नॉट पॉसिबल. सो दीज टू थिंग्स आर नॉट पॉसिबल which we are supposed to innovate in our pedagogy. I think so. I have made my point very clear. अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, बिकॉज दिस थिंग इज रिलेटेड विद योर हाई क्वालिटी support centers we have to create. Professional, academic, and career counseling system should be established. Again, as far as the physical, psychological, and emotional development of the students. So physical strong होना चाहिए बच्चा, psychological strong होना चाहिए. आजकल बहुत सारी बीमारियां आ रही है बच्चों के दिमाग में, वो एंजाइटी हो जाता है, फियर ऑफ फेलियर हो जाता है, और उसको फेलियर का टैग ही नहीं लगना है. इमोशनल वेलबींग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाता है. तो प्रोफेशनल एंड एकेडमिक करियर काउंसलिंग शुड बी द इंटीग्रल पार्ट. किसी भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो HEI इज बीन एबल टू प्रोवाइड कि ही शुड नॉट गो फॉर सम टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करे, कुछ और करे, प्रेशर इतना बना दो उस पर तो कर ना पाए. तो उसको उसको उसके लिए कुछ और चीज रिकमेंड करो और उसको उस दिशा में जहां डालो जो जिस जगह वो जाना चाहता है, उसको प्रेशराइज ना करें. तो ये फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उतना ही प्रेशर डालो जितना, जैसे नींबू है, अगर नींबू को आप रख दोगे ना तो वो नींबू रस नहीं देता. नींबू को काट के भी रख दो तो भी रस नहीं देता. नींबू को प्रेशर डालना पड़ता है तब वो रस देता है. तो उतना ही प्रेशर डालो कि वो रस निकले, इतना मत डालो प्रेशर के वो उछल के कहीं और चला जाए, आंख में लग जाए. प्रेशर भी उतना ही एक्सेप्टेबल है जितना वो बियर कर पाए. एक बियॉन्ड लेवल से ज्यादा प्रेशर देने से क्या, इट बिकम्स ए प्रेशर कुकर एंड इट्स गोइंग टू कुक द पर्सन माइंड. उसका ब्रेन कुकर में डाल के मतलब उबाल दिया आपने. ऐसा प्लीज ना करें. उतना ही लेवल डालें कि उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकले. इट्स लाइक ए ट्यूब ना, टूथपेस्ट आप सुबह यूज करते ही हो तो उतना प्रेशर डालते हो तो जितना टूथपेस्ट आपको चाहिए. सिंपल लॉजिक्स की बात, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ऐसा तो नहीं ना पूरी दबा देते हो, मुट्ठी भर के दबा देते हो सुबह सुबह तो सारा बाहर निकले आएगा टूथपेस्ट, नहीं तो सारा वेस्ट हो जाएगा. तो आप उतना ही प्रेशर डालते हो जितना आपको उसके आपको टूथब्रश पे चाहिए. सिमिलर थिंग्स यू टू अप्लाई ओवर हियर विद द स्टूडेंट्स आल्सो. उतना ही प्रेशर दीजिए कि जितना आपको ट्यूब लगाने के लिए, दांत साफ करने के लिए मंजन की जरूरत होती है, सिंपल टर्म्स में. Rationalization, institutional architecture, that's another point over there. अब 15 साल के अंदर HEI चेंज हो जाएंगी आने वाले टाइम में. जो इस रेस में पहले दौड़ गया, जो इंस्टीट्यूट इस रेस में पहले चले गए, जिन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड कर दी नॉलेज कंपोनेंट के अंदर, दे विल बी द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप बाय द HEIs. नेक्स्ट 15 years is going to be their transformation era. 15 years के बाद they are going to be blooming because in time to come head of the institutions will be offered high academic qualification, demonstrating administrative skill, leadership capabilities, manage complex situations. This is in time to come is going to come in over there. नेक्स्ट इज दैट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. एक अपना रिसर्च फाउंडेशन बनाइए अपने इंस्टीट्यूट में, रिसर्च को प्रमोट करिए. रिसर्च प्रमोशन का इसलिए जरूरी है, जब तक आप कोई चीज को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी जो भी आप बना रहे हैं वो आपका अकाउंटेबिलिटी में नहीं आएगा, ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो पाएगी. तो यही आपके HEIs को आने वाले टाइम में जो दिखाएंगे आप 10 साल बाद
कितने आपने पेटेंट्स करवा लिए, कितने आपने क्रिएटिव प्रोसीजर में डाल दिए। 10 साल बाद आप देखेंगे कि मेरे इंस्टीट्यूट के पास कम से कम 100 से ऊपर पेटेंट्स हैं। दैट इज योर नॉलेज कंपोनेंट, दैट्स योर नॉलेज सुपर पावर ऑफ योर। और मेरे पास स्कोपस से रिलेटेड पेपर्स हैं। तो तरीका ये होता है कि पहले आप अपना इनोवेट करिए, उसके ऊपर पहले पेटेंट करवाइए, पेटेंट करवाने के बाद उसको पब्लिश करिए पेपर उसका। नहीं तो अगर आपने पहले पब्लिश कर दिया, दूसरा उसको उस आर्टिकल को चुरा लेगा, उसकी कॉपी कर लेगा। तो पहले पेटेंट करवाइए, पेटेंट के बाद उसको आप पब्लिश करवाइए। तो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फिर आप उसके ऊपर कमर्शलाइजेशन के ऊपर मनी भी चार्ज कर सकते हो। आप ये सोचिए कि आप क्लासरूम तक नहीं सीमित हो, क्लासरूम के बाहर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना आप क्लासरूम में पढ़ के कमा रहे हो, उससे ज्यादा आप बाहर कंसल्टेंसी से कमा सकते हो। बिकॉज फैकल्टी हैज टू डू 4 एरियाज। जो हम बात करते हैं फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बिकॉज एनईपी की हम बात कर रहे हैं। एरिया क्लॉज, AREA, एरिया। आप प्लीज नोट कर लीजिए, एरिया। ए स्टैंड फॉर एकेडमिक, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, E stands for extension activities, and last A stands for academic administration. हर फैकल्टी के चार रोल्स हैं। एकेडमिक मीन्स डायरेक्ट टीचिंग, 17 घंटे 14 घंटे 15 घंटे जो आप डायरेक्ट टीचिंग करते हैं, वन पार्ट। 6 घंटे की आपकी हफ्ते के अंदर रिसर्च होनी चाहिए, जो आप थ्रू आप रिसर्च के अंदर आप रिसोर्सेज पे काम कर सकते हैं, अपने पेटेंट्स पे काम कर सकते हैं, बच्चे के साथ बैठ के आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। 6 घंटे का इनपुट आपको रिसर्च पे चाहिए चाहिए। तीसरा नंबर पे आता है एक्सटेंशन एक्टिविटीज। सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आपके क्लब्स होंगे, आपके पास कमिटीज होंगी, आपके पास इंस्टीट्यूट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं, उसको किसी न किसी पार्ट को आप हेड जरूर करिए। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एंटी रैगिंग कमेटी का मेंबर हूँ, या एंटी रैगिंग कमेटी को हेड कर रहा हूँ, या मैं आईसीसी को हेड कर रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट ग्रीवांस सेल को हेड कर रहा हूँ, या मैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल को हेड कर रहा हूँ, या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हूँ, या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जिसके ऊपर यूएचवी सेल है उसका मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, हैप्पीनेस क्लब है आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब है आपका, एनएसएस है, एनसीसी है, मोर देन 14-15 क्लब्स आर देयर। हर क्लब्स के अंदर 100 बच्चों से ऊपर नहीं होने चाहिए, उसको आप हेड कर सकते हो और शो कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन माय एक्सटेंशन एक्टिविटीज अंडर दीज हेड्स। एंड लास्ट होता है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके सामने आते हैं। एक, you have to be evaluating your students in a just and impartial way, means जो उनके पेपर्स आपने लिए हैं उस पेपर्स को आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के जांचिए, और जो उनका वैवावोस लिया है उसको भी आप पढ़ के आराम से जांचिए। दैट इज नोन एज एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कोई डिसिप्लिन इशू आता है, कुछ और इश्यूज आते हैं, उस चीज को आप अपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर सॉल्व करिए और उसको आप इम्प्लीमेंट में लाइए। अगर आप दो पार्ट कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं मैंने सिर्फ क्लासरूम टीचिंग कर लिया और रिसर्च कर लिया और मैंने एक्सटेंशन एक्टिविटीज में मेरा नाम नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन, जीरो एकेडमिक एडमिशन जीरो, दैट मींस यू आर डूइंग हाफ वर्क, you should be paid half salary for that. You have to do all four domains में काम करना है और अपने बायोडाटा पे रिफ्लेक्ट भी करना है उसको कि मैंने इस एरिया में काम किया हुआ है। एरिया क्लॉज AREA, एकेडमिक रिसर्च, एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द mantra for that. Then next is the financial support to the students, that's the scholarship area. तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स देखा मार्जिनलाइज सोसाइटी को, और यूनाइटेड नेशन एसडीजीज के अंदर गोल भी है एजुकेशन इज टू बी अवेलेबल टू एवरीवन, दैट्स अ पार्ट टू बी टेकन अप बाय द प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। देन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बात करते हैं, आप लोग मूक्स करते रहिए, मूक्स का एक एक कोर्स करते रहिए, हर सेमेस्टर में एक मूक्स का पेपर निकाल दिए फैकल्टी लोग, हर फैकल्टी अपने बच्चों को बोलिए एक मूक्स का पेपर निकालिए। आप अगर मार्केटिंग के अंदर आपने एसडीएम के ऊपर एक मूक्स निकाला, या आपने कंज्यूमर बिहेवियर पे निकाला, या आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पे निकाला, तो जब आपने 5-7 मूक्स निकाल देंगे तो यू आर डोमेन स्पेशलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डोमेन, अपने एक डोमेन को पकड़ के जितने भी उसके मूक्स हैं वो सारे निकालिए, यू रिफ्लेक्ट दोस थिंग्स ऑन योर बायोडाटा कि आई हैव कंप्लीटेड दिस मूक्स, और आने वाले टाइम में 50% आपका जो कोर्सेज हैं इट विल बी थ्रू मूक्स। आपके अगर मान ले 8 सब्जेक्ट्स हैं, आने वाले टाइम में 8 में से 4 सब्जेक्ट्स बच्चों को बोला जाएगा आप मूक से करिए,
वहाँ पे IIT के प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं सिस्टम को, तो ये 50% तक जाएगा। आज आपकी यूनिवर्सिटी ने एक एक सब्जेक्ट लिया है, कल को ये बढ़ के 50% होगा। 50% होने का मतलब क्या है कि आपकी रेगुलर फैकल्टी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। इसलिए जो क्वालिटी फैकल्टी है वो ही आगे परस्यू कर पाएगी, जो नहीं क्वालिटी को मेंटेन करेगा वो धीरे धीरे वीड ऑफ हो जाएगा। सो मार्क माय वर्ड्स, अपने आप को अपग्रेड करिए आने वाले टाइम के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क फॉर यू एज फार एज फैकल्टी इज कंसर्न। सो मूक्स को प्लीज अडॉप्ट करिए, स्वयं पोर्टल पे जाइए और NPTEL पे जाइए, हर सेमेस्टर में एक मूक्स जरूर निकालिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनलाइजेशन एजुकेशन मींस वर्ल्ड बॉडी रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड रैंकिंग पे कहीं पे भी नहीं है, 1000 में भी नहीं गिनती आती है हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट की। हम बात करते हैं IIMs की, IITs की, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन हम कहीं स्टैंड नहीं करते। आप ये मान के चलें कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट USA के अंदर हैं, उसके बाद आपके UK के अंदर हैं, जर्मनी के अंदर हैं, फ्रांस के अंदर है, कुछ एक आपके जापान और चाइना के अंदर हैं। बाकी इंडिया का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, आएगा भी तो मतलब 470 480, और 480 को आप ये बोलोगे टॉप 110 में आ रहा है, तो टॉप 10 में तो कोई आ ही नहीं रहा हमारा इंस्टीट्यूट। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि क्यों पीछे हैं? because we have not adopted outcome based education, OBE framework हमने अडॉप्ट नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सिलेबस के ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव, हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। आज ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम खत्म, ऑब्जेक्टिव इज नाउ ऑब्सोलीट। नाउ सिस्टम आप मूविंग टुवर्ड्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आप एक भी क्लास लेते हैं, एक एक सेशन आपका एकेडमिक सेशन, जो एक लेक्चर होता है दैट्स ए सेशन, उसका भी आपको माइक्रो प्लानिंग में आउटकम होना चाहिए। अगर मैंने आपके साथ एक क्लास अटेंड करी, तो मेरे मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि मैं मैडम की क्लास ये अटेंड कर रहा हूँ 1 घंटे की, इससे मेरे को क्या आउटकम मिलेगा। दैट आउटकम मस्ट बी पुट अप बिफोर गोइंग इन द क्लास, कि बच्चे तुम ये इस क्लास में आओगे, ये आउटकम होगा इस क्लास का। ये पहले आपको एनालाइज करके रखना पड़ेगा। अगर ये एनालाइज नहीं करके रखेंगे, आपका ये जो फर्स्ट सेशन है, अगर आपने 40 एक सब्जेक्ट लिया, एक सब्जेक्ट के अंदर आपने माना कि 4 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट्स के ऊपर मैंने 10-10 घंटे की टीचिंग करी, तो मतलब 40 लेक्चर्स ले लिए। 40 लेक्चर लेने के बाद वो बच्चा बोलता है कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर तो क्रिएटिविटी तो दूर चली गई, और ना तो आपका इवेल्युएशन आया, ना आपका कोई लर्निंग हुआ। तो वो बच्चे के अंदर पहले आपको बताना पड़ेगा, बेटे फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू गिव यू आउटकम दिस। नाउ उसको आउटकम को लाने के लिए यू हैव गॉट 3 मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म आपके सामने हैं, जो आपके सामने 3 टूल्स हैं। 3 टूल्स में से कौन सा टूल लगाना है, दिस इज योर बेबी, दिस इज योर बेबी। मींस अगर आप कोर्स आउटकम बना रहे हैं, देयर हैज टू बी 3 टूल्स। वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है, that's the case analysis. There is a several method to solve the problem. Case study is one of them. There is n number of other problem solving techniques. So आप ये मान के चले कि जब हम क्लास में गए बच्चों को बताने के लिए, तो फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम, उसको हमें सॉल्व करना है। क्योंकि जब बच्चा बाहर जाएगा, चाहे इंजीनियर है, चाहे चाहे वो क्या कहते हैं सोसाइटी में जाएगा, तो एक ही चीज सामने आएगी उसकी, कि हमें क्या करके देना है, क्या सोसाइटी को देना है। तो क्या है, सोसाइटी इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारा बच्चा बाहर जाएगा, उसको प्रॉब्लम ही फेस करनी है, ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम्स, एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हिम टू फेस द प्रॉब्लम्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ बिजनेस। MBA का स्टूडेंट है, जितनी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसको सॉल्व करते जाओ, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। You want work out, vouch out. Each problem is a business proposition, is an opportunity to develop a business. जितनी प्रॉब्लम तुम्हारी, that's a solution. If I'm going to provide on that solution, that's my business. So just think on those terms. तो पहला मैंने आपको बताया, कोर्स जब हम प्लान क्लास करते हैं, सेशन लेते हैं, तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरे नंबर पे उसको बच्चों को इंटीग्रेट करिए, उसके सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है पार्टिसिपेटिव लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम करिए, ब्लेंडेड क्लासरूम करिए। 2 एस्पेक्ट में आपको दे रहा हूँ पेडागोगी के अंदर, ब्लेंडेड क्लासरूम एंड फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब रोल रिवर्सल, स्टूडेंट विल कम ऑन द स्टेज एंड यू हैव टू टेक द बैक स्टेज एंड ask the student to give the analysis of that part. आप 5 या 10 मिनट का फ्लिप क्लासरूम करिए, पूरा सेशन जो हमने बनाया
किसी बच्चे पीछे को वाले को बच्चे को उठा के आगे लाइए, बोले बेटे जो मैंने क्लास में पढ़ाया समाप्त करिए इसको। तो he has to be attentive in the class. Participative learning is the second important tool. And third, जब हम थर्ड लेवल की बात करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब होता है जब हम उसको टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें। देखो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से हमें बच्चों को पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस से, फॉर एग्जांपल क्लास। तो फोटोसिंथेसिस जो है हम बताते हैं, सूरज है, पत्ता है, सूरज की रोशनी पड़ी पत्ते पे, पत्ते से उसका फल बन गया, एक फल छोटा। Means we have to take them into the garden and see this is the sunlight, sun rays coming on here. You show them the banana tree. Banana tree के पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं, जितना बड़ा पत्ता, पत्ता क्या है, किचन, किचन क्या है, उससे उससे उसका फूड डेवलप होता है, फूड आता है, मतलब जितना बड़ा पत्ता होगा उतना बड़ा उसका फल होगा। मीन्स यू सी बनाना के लीव्स इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उसके जो बनानास का जो गुच्छा लगता है इतना बड़ा लगता है उसमें, वो वजन भी नहीं उठाता है। अगर आप इमली के पत्ते देखेंगे, इमली के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है और छोटी सी इमली लगती है उसमें, क्योंकि उसके पत्ते छोटे हैं। तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज एंड गिव द फीलिंग टू द स्टूडेंट्स कि दिस इज बिकॉज ऑफ द लीव्स। अगर लीव्स बड़े हैं तो फ्रूट उसका बड़ा होगा। लीव्स इज अ किचन फॉर अस। तो ये चीज आपको बच्चों को बतानी है, ये आपको खुद समझानी है, ये धीरे धीरे आपको बतानी पड़ेगी बच्चों को। आपको अपने 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 फील्ड के अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, एक एक सेशन के अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जोड़ना पड़ेगा। देन ये मैंने आपको मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। The motivated, energized and capable faculty 2030 talks about these. Design your own pedagogy. Faculty अपनी खुद डिजाइन करे, because this is going to be सेशन 1, सेशन 2। जो आप अपना सेशन को लेंगे वो आपको एक फैकल्टी और दूसरे फैकल्टी के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देगी। ये मैडम अच्छा पढ़ाते हैं, ये फैकल्टी सर कुछ नहीं पढ़ाते, बच्चे खुद बोलेंगे आपके। आपको नैक के अंदर भी इसके नंबर मिलेंगे। आपको जितना ज्यादा कनेक्ट बच्चों के साथ बनेगा उतना बच्चे आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू गिव एनर्जी एंड यू हैव टू बी ए कैपेबल फैकल्टी। You should not get a tag of incapable faculty. You have to make yourself capable. So this is the next point. Effective governance की मैंने बात की, leadership की HEI that has to be seen by the management of the institute. They will have to, and somewhere down the line they have to nurture the leadership among the student faculty members. uh, that is the baby of the management. Next is the regulations. अभी हम बात करते हैं यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाउ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विल चेंज इनटू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं HECI। इसकी और बहुत सारी बॉडीज बनेंगी। उसके अंदर पहली बॉडी जो है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। GEC के अंदर फर्स्ट डोमेन बनेगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट HEGC। देन नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। अभी नैक और जो NB है ये खत्म होंगे, दोनों खत्म होंगे आने वाले टाइम में। इनकी जगह आएगा सिस्टम नैक का NAC। अभी हम देख रहे हैं NAAC, ठीक है, अब बनेगा वो NAC, द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। then there has to be National Higher Education Regulatory Council, NHERC, that will be a regulations which are light but tight. It's not going to be so easy to, so they are ensuring that financial probity and public spiritedness, eliminate the conflict of interest with the transparent and self disclosure system. ये आने वाले टाइम में आएगा। आप इस चीज को टेकअप कर लेने से। टीचर एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टेक्निकल एजुकेशन। देन वी हैव टू डेवलप ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, a pool of outstanding senior and retired faculty members. They are going to be joining this bandwagon of national mission of for mentoring. अगर आप अच्छा काम करेंगे लॉन्ग टर्म, एक जगह बैठ के, एक इंस्टीट्यूट में बैठ के, देयर हैज टू बी जॉब ऑफर्स। कुछ फैकल्टी होती है 2, 3, 4 साल के बाद अपना जगह छोड़ा दूसरी जगह चले गए। अब जब आपने ज्वाइन किया किसी इंस्टीट्यूट को, 1 साल तो आपको सिस्टम समझ में लगता है। 1 साल में जब आपसे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कुछ काम करके दोगे, तो छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हो।
तो इस तरह के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 2 साल में फैकल्टी छोड़ देते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं, दे आर द जॉब हॉपर्स। ग्रास हॉपर का नाम सुना होगा ना, एक टिड्डा होता है, वो यहाँ से उछल के वहां चला जाता है, वहां से उछल के वहां चला जाता है। तो दे आर नेवर गोइंग टू गेट, वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। तो आप प्लीज मान के चलिए, अगर आपको डिलीवरेंस देना है, अपनी कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट करना है अपने आप को, प्लीज एक जगह टिक के अच्छा काम करिए, बढ़िया काम करिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करके, और चाहे तो चेंज एजेंट के रूप में काम करिए। आप चेंज खुद होइए और मैनेजमेंट को चेंज करने की कोशिश करिए, कुछ वो समझेंगे, कुछ आप समझेंगे, उसी जगह बैठ के बढ़िया काम करिए। So this is my advice, not to change your मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से छोड़ के वहां चले गए, वहां से सही जगह जाओगे, एक ही चीज मिलेगी आपको, एक ही सिस्टम मिलेगा। हिंदुस्तान है, सब एक जैसे लोग हैं, कोई शक्लें बदल जाती हैं, काम करने का ढर्रा सबका एक ही है। आप कर लीजिए, आपके आउटकम सेम आएंगे, चाहे जितनी मर्जी रीडिंग ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट की सेम रीडिंग आएगी। दिस इज माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन। सो प्लीज आप इस चीज को अवॉइड करें, और अपने खुद सीवी के अंदर इस चीज को शो ना करें कि भाई मैं जॉब हॉपर हूँ या समथिंग लाइक दैट। Then is the professional education. Professional education stand alone technical universities, health universities, लीगल एजुकेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। जितने मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम में, आप ये मत सोचिए कि फाइनेंस की एक्सपर्ट हूं मैं। आपकी घुसपैठ मार्केटिंग में भी होनी चाहिए, आपकी घुसपैठ आईटी में भी होनी चाहिए। आप अपने आप को मल्टी स्किल बनाइए। क्योंकि सिविल वाला बोलता है मेरे को क्या मतलब है मेरे को सीएस में जाने से। सिविल वाले को बोलिए तुम सीएस में घुसो, और सीएस के अंदर जो चेंजेस लाने हैं सिविल के अंदर, थ्रू सीएस ब्रिंग दैट चेंजेस। तो मल्टीडिसिप्लिनरी इसलिए जरूरत है। आप अपने डोमेन में फ्लक्चुएट, घोड़ा चलता है सड़क पे, उसके साथ में ना वो लगे होते हैं ऐसे, कुछ देख नहीं पाता था मैं। तो सिंगल डोमेन वाला बंदा होता है, वो एक तरफ चलने वाला बंदा, मल्टीडिसिप्लिनरी 360 डिग्री मूवमेंट। तो आपको अपना नजरिया 360 डिग्री बनाना पड़ेगा, व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। व्लॉगिंग से ही आप 360 डिग्री मूवमेंट पे आप स्कैन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। सो प्लीज चेंज योर सिस्टम, और उसके अंदर सबसे बड़ा इनपुट का काम करेगा आपका स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल में आप जाइए, आपसे अच्छे अच्छे फैकल्टी है, उनसे सीखिए आईआईटीज में। बिकॉज अगर आपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को खत्म कर दिया अपने साथ में, तो समझ लो यू आर डेड एलिमेंट। हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं, अगर हमने सुना ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या, अगर हमने पढ़ा नहीं तो बोलेंगे क्या। तो आप प्लीज अपने आप को इम्प्रूव करिए उस चीज पे। देन द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो भी टेक्नोलॉजिकल अपकमिंग्स आ रहे हैं उन चीज को इंट्रोड्यूस करिए। ऑनलाइन एजुकेशन आने वाला टाइम, ऑनलाइन एजुकेशन का होने वाला है, डिजिटल एजुकेशन का होने वाला है। कोई क्लासरूम के अंदर अटेंडेंस सिस्टम नहीं रहेगा। थोड़े टाइम के बाद 50%, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट करके धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा, स्किल्स पे काम चलेगा। तो प्लीज प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज। दिस इज एनईपी। नाउ एनईपी के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, आपकी जैसे आप मतलब पंजाब से, तो पंजाब की भाषा आपकी गुरुमुखी है, तो उसको प्रमोट करिए। उसके अंदर बच्चा जो सोचता है ना, तो पहले अपनी मातृभाषा में सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश दिमाग में, हिंदी में, फिर वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है। तो जो सोचने की जो लैंग्वेज है ना दिमाग के अंदर, वो उसकी मातृभाषा होती है, जो बच्चे ने पहले जन्म बचपन में सीखी है। तो पहले आप बच्चे को जिस लोकल डायलेक्ट से आ रहा है, वो डायलेक्ट पे ना जाइए। रशिया और जापान, चाइना हमसे क्यों आगे हैं? बिकॉज दे रेस्पेक्ट देयर रीजनल लैंग्वेज, दे रेस्पेक्ट देयर लैंग्वेज। हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश समझ में आ गई, बहुत बढ़िया आदमी है, इसको इसको तो हिंदी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तो बेकार हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। आज का टाइम, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। 5G कंपोनेंट आएगा, आप वहाँ पे तमिल में बोलना, यहाँ पे मैं हिंदी में समझ जाऊंगा। 5G टेक्नोलॉजी इस चीज को खत्म करने वाली है आने टाइम में। तो ये कोई लिमिटेशन रहने वाली बात नहीं है। अगर कितना अच्छा स्किल आपके पास लगता है, how many you can be able to orate in English, that is not going to take the things in time to come. So this is not going to be a barrier any longer in time to come with the advent of 5G technology on that issue. Then financing education is must factor। 6% GDP आज हमारे देश चल रहा है। आने वाले टाइम में we have to move further on that point। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी पहले नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। इन इन 5-7 चीजों को मैंने आपसे बताया है, आज डिस्कस किया क्लास के अंदर। इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, इवैल्यूएशन ब्रिंग्स इन रूब्रिक्स। अगर आपने क्लास में रूब्रिक्स लगा दिया, समझ लो आप एकदम से इवॉल्व कर जाओगे। अपने अपने सब्जेक्ट्स का रूब्रिक्स बनाइए। मैंने आपको वर्ड दे रहा हूँ, रूब्रिक्स।
rubrics means कि आपने बच्चे को अगर 1 मार्क दिए तो 1 मार्क किस बेस पे दिए और किस पॉइंट पे दिए, 2 मार्क्स दिए तो किस बेस पे दिए, किस पॉइंट पे दिए, और 3 मार्क्स दिए तो किस बेस पे दिए, किस पॉइंट पे दिए, और 0 दिया है तो किस बेस पे दिया, किस पॉइंट पे दिया। वो पूरा ट्रेजेक्टरी बनता है और उसके बेस पे इवैल्यूएशन होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इज गोइंग टू ब्रिंग इन, प्लीज मेक योर कोर्स प्लानिंग rubrics। सो आई थिंक सो मैम, बहुत कुछ है, बोलते चले जाएंगे इसमें तो। आप पेडागोगी इनोवेशन करने के टेक्निक्स बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी कराएंगे। लेकिन मैम, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय पॉइंट्स एज फार एज द एनईपी इज कंसर्न। I try to make it more understandable to every teaching fraternity. I think so. I have made my point very clear to everyone over here. Thank you. Thank you. If somebody who asked any query over here on the issue, please, they're welcome. Thank you very much, sir. And it was a very nice session, and you have elaborated very well about the NEP, and especially you have explained Bloom's taxonomy. It is a very important to understand. And with that, points you have explained, that will be, I think that all the faculty member have got a good information by the given by you. So thank you very much, sir, giving us your precious time and your knowledge. It was very vast, as I know very well, and other has also got this opportunity to get these all informations. Thank you, madam, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your valuable knowledge. Second guest we have with us Dr. Maninder Kaur, Director, Guru Nanak Institute of Management. She has published and presented numerous research papers, contributed book chapters, patent research papers on various topics in national and international conferences and journals, with publications in Scopus, ABDC, and WOS. She is aboard as an active research reviewer with national and international journals. Now, I request Dr. Maninder Kaur to share her valuable knowledge with us. Ma'am, please. वेट, शायद उनका ना इंटरनेट इशू है, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रही हैं। Okay, ma'am. इसके बाद सर को बुला लो, पहले मैडम को फिर से बुला लेते हैं अभी, ठीक है, देख लेते हैं। Okay, ma'am. I request Dr. Gurudev Thakur, MBA HOD, to kindly say few words. Okay, I'm a absolute point of in the dilemma to say whether to good morning or good afternoon. So I think we are exactly at 12. So good afternoon, otherwise for all the people who are participating in this. And I'm thankful to Dr. Ajay ji, who has addressed all the issues which are embedded in the new education policy 2022. And the areas that he has mentioned, that basically we have to focus on cognitive process, effectiveness, and its academic administration also. So I hope this session and the next session that's likely to go in the air through this dashboard and the form will be enlightening the knowledge and domain of various knowledge domain for all the participants. And moreover, I think there might be some of the participants who will highlight the area that the span of education, academic education requirement is likely to be reduced. As such, they have waived MPhil part if someone is going for a 4-degree year program with research. Otherwise, if someone is only completing a degree in 3 years, that will be known as a degree. If someone go for a 4-year degree program, in that case, they can directly go for doctorate degrees. So I think the new education policy, in my opinion, is good one, and a lot of research work, brainstorming sessions has already been done, and then this policy was placed for implementation at national level. And I think we are competent enough to meet all kind of requirements that are stipulated through this new education policy. And as far as we are at a point, we are at a point of implementing it. I hope the time this policy will be implemented, basically at the university levels where the curriculum is to be designed, but we will be playing a role of
paramount importance the time we will be going for implementing it at our college levels. Thanks a lot, everyone, for this. Thank you, sir. Next, I would like to request Dr. Dipti Sharma, ma'am, officiating principal, KCSMCA and IQAC head, for a vote of thanks. Ms. Akansha, are we inviting Dr. Maninder Kaur? Ma'am, actually, ma'am, joining, there is some network issue. इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. Okay, fine, ma'am. So it is my proud privilege that on behalf of KC Group of Institutions and the entire organizing team of National Seminar on NEP 2020 and me, Dr. Deepti Sharma, extending a very heartily vote of thanks to Professor Dr. Ajay Kumar, Director, Tecnia Institute of Advanced Studies, Dr. Maninder Kaur as well, for accepting our invitation. And on the topic of new education policy implementing by Government of India, we learned about STEM subjects, the multidisciplinary and interdisciplinary courses, the learning level according to the Bloom's taxonomy, importance of time frame on HEI and area mantra of course. So I'm very much thankful to the worthy management of KC Group of Institutions, Honorable Chairman Sir, respected Vice Chairman Sir, respected Professor Dr. Rashmi Gujrati ma'am, Campus Director KC Group of Institutions, for giving us an opportunity to listen to such a knowledgeable session. Thankful to Dr. Gurudev Thakur Sir, HOD MBA, for a knowledgeable speech on the topic. And a big thanks to organizers of seminar, researchers for the paper present, and participants also. I thank you all. Thanks a lot, ma'am. Thank you. We can leave now and we will be joined in the next session. That will be a technical session. Okay. Thank you very much. So technical session start at 2 o'clock, and all are requested to join this session, present the presentations and their research works. Thank you. Ms. Akansha. Ms. Akansha, are you there? Okay, thank you, sir. Yes, ma'am. दीप्ति मैम चली गई, डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने.